Going to study about the sum of n terms of an AP. There are two equations normally. One is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 to d. Second one is Sn is equal to n by 2 into a plus l. Here a is the first term, n is the number of terms, d is the common difference, and l is the last term. Okay, whenever if the first term and the last term is given, you will have to take the second equation. If you are taking any equation, you will get the answer. But if the first and the last term are given, it will be much more benefit. It will be much more easier if you are taking the second equation, this one. But here you can take the first equation if the last term is not given. Okay, if the last term is not given, you have to take the first equation, and from that one you have to do it. By both of the equations, really you will get the answer. But try out the easier way. For example, as I said right now, if you are taking the first and the last terms are mentioned in the question, then try not the first equation, rather than that try to the second equation. Okay, here goes the first question before you. How many terms of an AP, and the AP is given there and to be taken so that the sum is 0. So the sum should be 0. So what is given? First of all, we will write the given AP is. What is the given AP here? 18, 16, 14, etc. It is a decreasing AP. So A is equal to 18 here. D is equal to, we know it is T2 minus T1. So here it is 16 minus 18, and that is minus 2. Now you got A and you got D. And what is given? What is also given? The sum is 0. So here you will write Sn is equal to 0. That is given. We already know the equation of Sn, so we will write, we have Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. We are choosing this equation because the last n term is not mentioned. So here Sn के जगह Sn का value दीजिए. What is it? It is 0 is equal to n by 2 into 2 into, what is the value of a? It is 18 plus n minus 1 into, what is the value of d? It is minus 2. So here cross multiplying by 0 into 2, it is 0 itself, n into 2 into 18. You have to multiply them, and that answer you have to pick out and you have to write it down. So it is 36 plus, here minus 2 into n is minus 2n, then again minus 2 into minus 1 is plus 2. So again 0 is equal to n into, here you can see 36 plus 2 is 38 minus 2n, bracket closed. Now I'm just writing this in the normal form, n into 38 minus 2n is equal to 0. अभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो उसका मतलब क्या होता है? इसमें से कम एक नंबर तो 0 होना चाहिए. Here it is 38 minus 2n is equal to 0. So we can say 2n is equal to how much? 2n is equal to 38, right? You will take that to the next side. I will show you, just hold a second. Here it is. So you got n is equal to 19. So what is the question? How many terms are there of the AP? So now you got it as 19. So we can say, therefore the total terms, how much is there? The total terms will be 19. So you have to conclude it. Okay, whenever the question is given, you have to conclude that one. So you will write the sum of 19 terms, because you got the answer of 19.
विद इन ब्रैकेट्स n माइनस m, राइट। फर्स्ट टर्म का अंदर से बाकी अभी खाली n ही बाकी बचेगा, तो n माइनस m ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस, देन इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन है, d इज कॉमन, तो d बाहर निकालिए, माइनस d इंटू ब्रैकेट का अंदर n माइनस m ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों टर्म्स में n माइनस m कॉमन है, तो वो बाहर निकालिए, n माइनस n इंटू ब्रैकेट के अंदर बाकी क्या बचेगा, 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। इधर दो नंबर्स का प्रोडक्ट को 0 करके लेगा है, तो दोनों में से कम एक नंबर तो 0 होना जरूरी है। We are going to take the second number as 0. It is because every time whenever we are doing, we want something regarding a and d. a और d का बीच का रिश्ता वो चाहिए हमको, so I'm taking the second point. So here I can say 2a minus d is equal to 0. Now 2a is equal to d. Keep this into mind. 2a we got it as d, यानी कि d का वैल्यू 2a करके मिल गया. Let us go to the next page. So keep this, and again we are copying that on the top of the next page. So what did we got right now? D is equal to 2a. Okay, that's what we got. Now in the question you can see the second part is given. We have to find the ratio of the mth term and nth term. That's why we are going to write let am and an, you can take tm and tn also, okay, be the mth term and the nth term of the given AP. So what is the equation for mth and nth term? am by an is equal to a plus m minus 1 into d divided by a plus n minus 1 into d. Why we done like this? I told you. See here in the question it is given. We have to find the ratio of mth and nth term. Clear? That's why we are doing. Okay, come back. Here it is. So a plus m minus 1 into, अभी हमको d का वैल्यू मिल गया 2a, सब्स्टिट्यूट करिए 2a डिवाइडेड बाय नीचे भी a plus minus 1 into d का जगह फिर से 2a. Now open the brackets. A plus 2am minus 2a divided by a plus 2an minus 2a. Now a and a are like terms, you can add them together. So 2am minus a आएगा प्लस a और माइनस 2a कुल मिला के, नीचे वैसा ही नीचे करते हुए क्या आएगा 2an minus a. Now in these two terms a is common, take it outside, bring it outside. So a into 2m minus 1 divided by a into 2n minus 1. A and a, they are like terms, you can cancel them from top and bottom. Cancelling them, you will get 2m minus 1 into 2n minus 1. That is the required proof, है ना, यही साबित करना था. This is what you have to prove, hence proof. Next one. In an AP, if see S5 plus S7 is equal to 165, that is given. So what is given? First of all, write it down. S5 plus S7 is equal to 167. Then Sn का इक्वेशन पता है, तो S5 का कैसे निकल आएगा? 5/2 into 2a plus 4d, है ना. n minus 1 d था, इधर n तो 5 आया, तो एक कम होना चाहिए 4d, प्लस इधर n की जगह 7 आया, तो 7/2 into 2a plus कितना d आएगा, 7 से एक कम 6d, ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 167. अभी बोलिए, ये पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए इधर का 2 निकल जाएगा, तब 5 into 2a plus 4d. This is the simplest method, that's why I'm doing like this. 7 into 2a plus 6d. पूरा इक्वेशन मतलब RHS को भी मल्टीप्लाई करना है करते हुए. 167 into 2 is 334. अभी अंदर की और 5 को 7 को दोनों को लेकर मल्टीप्लाई करिए, यानी कि ब्रैकेट को ओपन करिए. दैट इज द वे हाउ टू टॉक. ओपन द ब्रैकेट्स. 5 2 is 10a प्लस 5 4 is 20d प्लस 7 2 is 14a प्लस 42d is equal to 334. Add the like terms. 24a
plus 62d is equal to 334. 3 of the numbers are even numbers, तो पूरा का पूरा 2 से डिवाइड करते हुए यानी कि आधा निकाल के लिखिए. 12a implies 12a plus 31d is equal to 167. Choose it as equation number 1. Now in the question the second information given is S10 is equal to 235. We are going to write it down. S10 is equal to 235. Sn का इक्वेशन क्या है? n/2 का जगह इधर 10 होने का वजह से 10/2 इंटू 2a प्लस बोलिए कितना d 9d. एक कम हो ना 9d is equal to that much. Now 10/2 is 5. If you are doing this, taking this 5 to the right side, this will become 2a plus 9d is equal to बोलिए 235 divided by 5. That is equal to 47. So that is the first equation. Another second equation, 2a plus 9d is equal to 47. Equation number 2. Now we are going to the method of elimination from our previous chapter. So elimination करने के लिए first equation वैसा लिख लीजिए 12a plus 31d is equal to 167. Equation number 1. सेकेंड इक्वेशन को पूरा 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो फर्स्ट टर्म जो है 12 आ जाएगा, तब एलिमिनेट कर सकता है. तो पूरा इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करिए, तब 12a प्लस 6 से मल्टीप्लाई करते हुए 9 6 आर 54, राइट. सो दैट मच d 54d इज इक्वल टू 47 को मल्टीप्लाई करते हुए 282 आएगा. अगर डाउट है तो बगल में ऐसा मल्टीप्लाई करके एक बार देखिए ताकि आपको यू विल गेट द परफेक्ट आंसर, यू विल नॉट मेक ए मिस्टेक. ओके, या इट इज. सो 282 इक्वेशन नंबर 2. अभी क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना. सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट जो है दोनों सेम नंबर्स भी है, सेम साइन का भी है. व्हेन दे आर कमिंग सेम नंबर्स एंड सेम साइंस यू हैव टू माइनस करने का तरीका क्या है, नीचे का साइन बदल दीजिए. दोनों साइड बदल दिया. अभी बदलने का बाद क्या करना है, दोनों को ऐड करना है. इधर ऐड करते हुए दोनों अलग अलग साइंस होने का वजह से ऐड करने का तरीका क्या होगा, पहले उसको डिफरेंस निकालिए, फिर बड़ा वाला नंबर का साइन दीजिए. डिफरेंस इधर आएगा 23, बड़ा वाला नंबर 54 है, उसका साइन माइनस दिया है तो माइनस 23d. इधर फिर डिफरेंस तो 115 है, बड़ा वाला नंबर 282 है, उसका साइन माइनस होने का वजह से माइनस 115. सो फ्रॉम दिस वन यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d, एंड d इज इक्वल टू माइनस 115. I think you can't see, just hold a second. Okay, right now I will just put the book. Yeah, here it is. Minus 115 divided by minus 23, वो तो 5 हो जाएगा. माइनस और माइनस प्लस है. अभी d मिल गया. इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम. आई एम टेकिंग इक्वेशन नंबर 2. उधर d का जगह 5 का सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. 2a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 47. तो 2a प्लस 9 5 आर 45 है, इज इक्वल टू 47. Then 2a is equal to 47 minus 45 होगा. What is 47 minus 45? It is 2 itself. So 2a is equal to 2. That is what we are going to take. So उसका अंदर से a is equal to 2/2. That is 1. You got the value of a. a भी मिल गया, अभी d भी मिल गया. देखिए ये रहा. a you got, it is as 1, and already you got d. So if you got the first time and then if you got the common difference, then it's enough. Now let us write the required AP. That is our question. हमको AP चाहिए था. So we will write the required AP is a plus d, a plus 2d. फिर एक का जगह 1 आया, so 1. अभी कॉमन डिफरेंस ऐड करिए 6, अगेन ऐड करिए 6 plus 5 is 11, etc. हो गया. This is the required AP. Next question, find the sum of the first 25 terms of an AP whose nth term is given. So 25 terms का इसका nth term दिया है, so पहले वो लिखिए Tn is equal to 2 minus 3n. nth term दिया है तो फर्स्ट term निकालिए उसका अंदर से. n के जगह 1 देते हुए फर्स्ट term निकल आएगा. n के जगह 1 देते हुए 2 minus 3 into 1, that is 2 minus 3, that is minus 1. Find the second term also. अभी n का जगह 2 दीजिए. 2 minus 3 into 2, that is 2 minus 6, that is equal to minus 4. You got the first two terms. Now 2 terms मिल गया तो कॉमन डिफरेंस d निकाल सकता है. t2 minus t1 है,
दैट इज -4 विद इन ब्रैकेट्स माइनस दूसरा -1 अलग ब्रैकेट में, ताकि आपका दूसरा माइनस जो है नहीं छूटेगा. सो -4 + 1 दैट इज इक्वल टू -3. दैट इज योर कॉमन डिफरेंस. नाउ वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स. इसको ए भी कहता है ना, फर्स्ट टर्म को ए भी कहता है. ए इज इक्वल टू -1. ओके, नाउ यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स. सो 25th टर्म अगर पता है तो you can choose the second equation to find the sum. That will be much more easy. I am choosing that one. So T25, 25th term. So 2 minus 3 into इधर 25th term के लिए n का जगह 25 देना है बस. That is equal to 2 minus 75 and that is equal to minus 73. So you got that last term also. Last term भी मिल गया. अभी उसका sum निकालना है. Sum of 25 terms. So बोलिए उसका equation क्या होगा? Sn is equal to, इधर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल गया तो आई एम टेकिंग द सेकंड इक्वेशन Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l. दैट इज अ सिंपल. फर्स्ट टर्म का जैसा नहीं, इधर सीधा माइनस करना है. 990 minus 9, it is 990. That will be the last term. So let us write our AP. The AP is what we will write? 110, 11 ऐड करिए उसका साथ क्योंकि कॉमन डिफरेंस 11 है. 121 है ना, 11 ऐड करते हुए 120 बनाएगा, 132 एक्सेट्रा. किधर तक जाएगा? लास्ट टाइम हमको पता है 990 है. सो 990 तक. सो मिल गया हमारा एपी. सो उसके अंदर से निकालिए एक एक. ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 110, डी इज इक्वल टू, इधर माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधा 11 का टेबल होने का वजह से 11 ही होगा डिफरेंस. एल इज द लास्ट टर्म. लास्ट टर्म को एल भी कहता है, टी एन भी कहता है. अगर गिनती लेना है तो टी एन करके लेना है. इधर तो सम है इसलिए एल ले रहा हूँ, लेकिन सम ढूंढने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसका बीच में कितना टर्म्स है, तो इसलिए टी एन करके भी लेना पड़ेगा. सो अगेन टी एन इज इक्वल टू 990. टी एन का इक्वेशन क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 990. नाउ ए का जगह सब्स्टिट्यूट करिए. 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 11 है, 990. नाउ 110 को राइट साइड में लेके जाइए. n माइनस 1 इंटू 11 इज इक्वल टू 990 माइनस 110. सो n माइनस 1 इंटू 11 इज इक्वल टू 880.
11 को भी राइट साइड में लेके जाइए, n minus 1 is equal to 880 divided by 11. How many times? 80 times, right? 80. अभी n is equal to -1 को उधर लेते जाते हुए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो 80 + 1 दैट इज 81. सो इसका मतलब क्या है, इसके बीच में 81 terms are there. There are 81 terms in between. That's the meaning of this one. Now we have to find the sum of this many terms because that is the question. इसका गिनती नहीं बल्कि इसका सम भी निकालना है. सो कितना नंबर से करके पता चल गया. नाउ Sn इज इक्वल टू, दो इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन ले रहा है क्योंकि लास्ट टाइम तो हमको पता है n/2 into a plus l. So S of 81 terms is equal to 81/2. What's the first term? It is 110. राइट, इधर ये रहा, ऊपर भी लिखा है 110. सो 110 प्लस 990 दैट इज द लास्ट टर्म इज इक्वल टू 81/2 इंटू ऐड करिए 1100 आएगा. फिर भी एक बार बगल में करके देखिए सो दैट यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक. नाउ कट हो जाएगा, 550 आएगा. सो 81 इंटू 550 दैट्स इक्वल टू 44,550. 44,550. So you got the total sum of numbers. So let us write, let us conclude.